अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4। ऑन द eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. So after reading the paragraph, now let's move towards their words meaning and their synonyms. The first word is customary, रिवाज या मामूल, usual. Eve, मौका means event. Visit, मिलने जाना, meet. Partake, शिरकत करना यानी हिस्सा लेना, participate in. Specific, खास, particular. Typical, typical means भी खास मखसूस. Specific, prosperity, खुशहाली, fortune. तो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज ऑन द eve ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, नए साल की शाम के मौका पर। इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को मिलने जाना रवायत है, उनकी कस्टम है। एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक ख़ास किस्म के बड़े खाने में शामिल होना। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जिसमें बहुत से ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। ये भी उनके एक दिन की रवायत है कि वो एक बड़े खाने के अंदर शिरकत करते हैं, तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। ऑन द eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. नए साल के मौका पर रिश्तेदारों को मिलने जाना और ख़ास किस्म के बड़े खाने में शामिल होना रवायत है, जिसमें बहुत से ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान के लिए मखसूस है, ख़ास है क्या चीज़? टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स इव डिनर, नए साल के खाने के लिए 8 से 9 पकवान तैयार करना। Because in Chinese language the word 8 means prosperity, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली। And the word 9 means long lasting, और लफ्ज़ 9 का मतलब है लंबी उम्र, इनके देर पा, कभी ना ख़त्म होने वाला। It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. नए साल के खाने के मौका पर चीनी ख़ानदान में 8 से 9 पकवान तैयार करना भी मखसूस है, इनकी रवायत है, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली और 9 का मतलब है लंबी उम्र। तो ये थी इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। ऑन द eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. अब इस लाइन को हम सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कि ऑन दिस ओकेजन ऑफ चाइनीज न्यू ईयर द चाइनीज मस्ट विजिट देयर रिलेशंस एंड टेक पार्ट इन अ बिग फैमिली डिनर। तो वर्ड्स के कलरिंग से आप जान रहे होंगे कि कैसे कैसे हमने उनको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स इव डिनर because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. तो सिंपल इंग्लिश है, the dinner consists of 8 or 9 dishes. It is a symbolic dinner. In Chinese language the word 8 symbolizes prosperity and 9 long life. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़े सेंटेंसेस को 2 से 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर डिवाइड किया और इसको सिंपल इंग्लिश में हमने कन्वर्ट कर दिया।
अब सिंपल इंग्लिश के बाद अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले हम बॉक्स क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है कि व्हाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस, कि ये खाना 8 या 9 डिशों पर, 9 पकवानों पर क्यों मुश्तमिल होता है। तो आंसर है इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज व्हाई द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस। कहता चीनियों की ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली है और 9 का मतलब है हमेशा कायम रहना। यही वजह है कि ये खाना 8 या 9 डिशों पर मुश्तमिल होता है, 8 से 9 पकवानों पर मुश्तमिल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 4 भी मुकम्मल होता है।